production function, first part of the unit, producers behavior and supply. It is a separate chapter altogether. Please, different books में number different हो सकता है, concept पे ध्यान देंगे. We are aware that both consumers and producers are needed for smooth functioning of the economy. ऐसा नहीं है कि सिर्फ consumers होंगे तो economy thrive कर जाएगी, या सिर्फ producers होंगे तो economy thrive कर जाएगी. No, both are equally important for the growth of the economy. In the previous 3 chapters, consumers equilibrium, theory of demand and elasticity of demand, उन 3 chapters की बात हो रही है. We focused our attention on the behavior of consumers. Now we will pay attention towards the producers. A producer makes use of various inputs like known as the factors of production. As a producer, आपको production करनी है. So what do you need? You need various factors of production. Quick recap. Factors of production क्या थे? Land, labor, capital, entrepreneurship. Land, labor, capital and entrepreneurship. कॉस्ट इन्वॉल्व क्या होती है इनमें? अगर आप लैंड हायर करोगे तो आपको क्या देना पड़ता है? रेंट. लेबर हायर करोगे तो क्या देना पड़ता है? वेजेस एंड सैलरीज. अगर कैपिटल हायर करोगे तो क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर क्या ले जाता है? प्रॉफिट्स. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी छपे होने चाहिए दिमाग में एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व भी छपी होनी चाहिए. A producer makes use of various inputs known as the factors of production for production of goods and services. Production is an important economic activity as it enhances the utility of the product. It enhances the utility of the product by changing it in the form needed by the consumers. Producers, they convert raw materials into more meaningful, more useful items. Cloth अपने आप में उतना यूजफुल नहीं है जितना एक टी शर्ट होगी. वायर अपने आप में इतनी यूजफुल आइटम नहीं है जितना जब वो एक सर्किट का पार्ट बन जाएगी, एक कमोडिटी का पार्ट बन जाएगी, मशीन चलाने में यूज हो रही. तो प्रोड्यूसर्स दे टेंड टू एनहांस द यूटिलिटी. आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, अपने आप में लैपटॉप या किसी काम उतने एफिशिएंट नहीं है. जब आप उसको यूज करेंगे, सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो कितना यूजफुल आइटम हो गया. For example, leather is of less use in its raw form. Leather पड़ा हुआ है तो leather का क्या करोगे? लेकिन जब वो leather के shoes बन गए, जब वो leather के jackets बन गए, तो वो useful है. Until it is transformed into some desirable product like shoes, bags, jackets, etc. The term production in economics covers a much wider range of activities than in its everyday use. To an economist, production, correct? The term production in economics covers a much wider range of activities than in reality. तो हम economics के point of view से बात कर रहे हैं. To an economist, production means any process that converts a commodity or commodities into a different commodity, converting raw material into a finished product. Production refers to transformation of inputs into output. You should know the exact definition. Define production. Production refers to the process of transforming inputs into an output. Inputs are considered as your factor inputs. आपने inputs use करे, मैं inputs use कर रहा हूँ. Land, labor, मैं खुद काम कर रहा हूँ. Capital, पैसा invest किया, and the risk of doing business. तो आएगा एक resultant output. For example, to manufacture shoes, we need various inputs like leather, nails, land, labor, capital, services of entrepreneurs. So many inputs are required to produce shoes. कोई भी होगा, कोई भी आपके production process है, तो factor inputs चाहिए होंगे. Production, it refers to the transformation of inputs into the resultant output. Production अलग term है, production function अलग term है. अभी हमने जितनी भी बातें करी किसकी करी? प्रोडक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन is the relationship
between the various inputs that we use and the resulting output. कोई भी function होगा तो वो कोई relationship होगी, जैसे demand function, relationship between the various factors affecting demand and the quantity demanded. Demand function, तो उसमें थे क्या, various factors affecting demand. So demand is a function of various factors. Production function, the relationship between the various inputs and the resulting output. There exists some relationship between the inputs and output of a firm. In economics, such a relationship is known as production function. Production function is an expression of the technological relationship between the physical inputs and the resulting output. Symbolically, OX, production function, OX is a function. OX is your output. Output is the function of various inputs. I1, I2, जितने भी आपके होंगे, labor use हो रहा है, capital use हो रहा है, raw material use हो रहा है, there can be n number of inputs. Where OX is the output, F represents the functional relationship, I represents the various inputs needed for the resulting output. Example of a production. So production function, OX is equal to F, brackets में I1, I2, I3, n तक आप दिखा दें. Okay, there can be any number of inputs. Simplification के लिए हम आगे जितना भी study करेंगे, we would consider only two inputs, one fixed and one variable. Convenience sake, we will be studying only with two inputs, one fixed and one variable. अभी सुनेंगे हम, सीखेंगे कि fixed क्या होता है, ये variable क्या होता है. But मैं कह रहा हूँ, when you are explaining the production function, the equation will be OX, output is equal to the function of various inputs. There can be n number of inputs. But moving forward, जो भी हम law study करेंगे understanding के लिए, वहाँ पे हम दो inputs use करेंगे बस, convenience sake. Example of production function, suppose a firm is manufacturing chairs with the help of two inputs, say labor and capital. अब ये assumption हुई ना, क्यों सर फर्नीचर भी तो चाहिए, तो लेबर एंड कैपिटल, वो कह रहे कि कैपिटल से बाकी सब हम खरीद लेंगे. कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, बाकी सब हम पैसों से खरीद लेंगे. तो मुझे बस दो चीजें चाहिए, पैसा और लेबर. जो मेरा रॉ मटेरियल है मैं पैसों से खरीद लूंगा, जो मेरी मशीन की रिक्वायरमेंट है मैं पैसों से खरीद लूंगा. तो मोटी मोटी दो ही चीजें चाहिए, लेबर एंड कैपिटल. सो द प्रोडक्शन फंक्शन इन दिस केस कैन बी रिटन एज आउटपुट ऑफ चेयर्स. जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो एक्स था ना, वो तो आउटपुट ऑफ व्हाट, चेयर्स is a function of inputs. यहाँ पे use क्या है, labor and capital. Production function defines the maximum number of chairs, OX, which can be produced with the given capital and labor inputs. If production function is expressed as 250 is equal to 7L, 2K, इसका मतलब आप maximum 250 chairs बना सकते हो अगर आपके पास 7 लेबर है एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है. 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल वो एक इमेजिनरी वैल्यूएशन हो गई कि 1 यूनिट ऑफ कैपिटल हमें क्या पता कि 1 करोड़ है या 1 लाख है, वो बस लिखने का एक एक्सप्रेशन. 250, the maximum capacity that can be produced with the given resources. The given inputs were 7 units of labor and 2 units of capital. It means 7 units of labor and 2 units of capital can produce a maximum of 250 chairs. आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन, OX is a function of various inputs. There can be n number of inputs. There can be n number of inputs. अगर हम assumption लेने की दो inputs हैं, लेबर और कैपिटल, और आउटपुट हमें पता है, तो आउटपुट ऑफ चेयर्स, आउटपुट ऑफ बेड्स, कुछ भी एक प्रोडक्ट हो सकता है एज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? इट इज an expression of the technological relationship or the functional relationship between the physical inputs and output of a good. You have to learn the exact definition. Production, the process of transformation of inputs into output. Production function is the functional or the technological relationship between the physical inputs and the output of a. More about production function. The production function specifies either the maximum output that can be produced with the given inputs
or the minimum quantity of inputs needed to produce a given level of output. करेक्ट? कैसे इसको हम इंटरप्रेट करें? करें एक इंटरप्रिटेशन ये है कि आप मैक्सिमम 250 चेयर्स बना सकते हो जब आपके पास 7 यूनिट्स ऑफ लेबर है एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है. अदर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द सेम थिंग, अगर आपको 250 चेयर्स बनाने के लिए कितने इनपुट्स चाहिए? करें 7 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल. सेम बात. Production function establishes a relationship. This is an important point. Relationship between input and output. Production function is nothing else but a relationship between the inputs that we are using and the resulting output. Okay, राघव ने re-enter करा. राघव ठीक है. Production function ठीक है. Production function is not economical in nature. Very important point. कह रहे नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर मतलब कह रहे वो ये नहीं बता रहा कि आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व क्या है, वो ये नहीं बता रहा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो. कह रहे क्यों? कह रहे वैल्यू की तो बात ही नहीं हुई, यूनिट्स में बातें हो रही हैं. 250 नंबर ऑफ चेयर्स, 7 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, 7 यूनिट्स ऑफ लेबर, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल. हमने कहीं पैसे यूज करे तो जहां रुपीज इन्वॉल्व ही नहीं है, जहां मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, इट कैन नॉट बी एन इकोनॉमिकल रिलेशनशिप. मतलब आपको ये नहीं पता चल रहा कि इस कैपेसिटी पे जब आप ऑपरेट कर रहे हो आप प्रॉफिट पे या लॉस पे हो. कह रहे वो तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी. कह रहे लेकिन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वो तो ये होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. कह रहे भैया अभी वो बहुत दूर है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अभी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं. फिर हम कहीं जाके इसको कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि अच्छा इसमें कॉस्ट बन क्या रही है. सो प्रोडक्शन फंक्शन के बाद कॉस्ट, फिर देखेंगे अच्छा हमारी कॉस्टिंग इतनी है, ये सामान बेच के रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है. तो जब कॉस्ट रेवेन्यू सब हो जाएगा तो पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर एज वी डू नॉट कंसिडर द वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. हम ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ इनपुट, हम ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ आउटपुट. वैल्यूएशन नहीं हो रही उनकी while studying production function. Production function is always defined with respect to a given technology. If there is an improvement in the technique of production, then the increased output can be obtained with the same physical inputs. Okay, we assume that there is no change in technology. Assumption. No change in टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी. करेक्ट? क्यों? करेक्ट? आपने बताया प्रोडक्शन फंक्शन कि इतने यूनिट्स यूज करोगे तो इतने इनपुट्स यूज करोगे तो इतना आउटपुट आएगा. बट अगर टेक्नोलॉजी एनहांस हो गई तो सेम लेबर यूज करके एफिशिएंसी बढ़ सकती है. अगर कई नई मशीन्स आ गई, कुछ भी आ गया, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन will hold true, will apply only when the state of technology remains constant. The production function includes only technically efficient methods of production, as no rational entrepreneur will use inefficient methods. Theoretical production function is expressed with reference to a particular period of time. It changes with different time periods. क्योंकि हो सकता है कि अभी कुछ है, आगे जाके कुछ हो जाएगी एफिशिएंसी. तो एक पर्टिकुलर एट प्रेजेंट अगर इतने यूनिट्स ऑफ इनपुट हैं तो रिजल्टिंग आउटपुट क्या होगा. इट मे बी डिफरेंट आफ्टर 6 months. तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम का ही प्रोडक्शन फंक्शन होता है. प्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट्स. प्रोडक्शन फंक्शन इज द relationship, functional relationship, technological relationship between the various inputs and the resulting output.